बजट ने संसाधन दिए हैं, अब संकल्प जगाना हमारा काम है। सरकार ने राहें खोली, अब चलकर दिखाना हमारा काम है। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं माननीय को ढाका प्रखंड एवं पूर्वी चंपारण के बेटी की तरफ से रहुआ लोगन के गोड़ लागतनी। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखने जा रही हूँ जो केवल अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बजट हमारे देश की दिशा और दशा दोनों तय करती है। Today, I rise not merely to talk about union budget, I rise to discuss the future of India's youth. Because the path of Viksit Bharat 2047 will not be built only by policies, it will be built by strengthening youth. But before we talk about empowering young minds, let me ask you all, what is the real Viksit Bharat 2047? Is development only per capita income? Only highways, AI and startup valuations? Only numbers is on economic surveys, or is development a smile on a child face, that dignity of August life, a young girl preparing herself not just for exam but for her life? Honorable members, true development of a country is not measured only by GDP, it is measured by happiness, strength and moral foundation of its people. Yes, scientific growth is essential. Technology, innovation, they are necessary, but let me tell you honestly, every child goes to maths tuition because it's practical, but how many of us study literature to learn empathy, to build character, to understand humanity? We are preparing youth for career, but who prepares them for consign? As APJ Abdul Kalam quoted, we don't need handsome leaders, but we need handsome leaders to give. Budget 2026 talks about artificial intelligence, then let it also nurture emotional intelligence. If we talk about human resource development, then let it also nurture human happiness, because humans are not just resources to be used, they are potential to be nurtured. And as ambitious by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, that Viksit Bharat 2047 is not only about economic growth, it's a national transformation, and that transformation make our India better from bottom to the top, from demographic pressure to demographic power. Budget 2026 not only invests in infrastructure, but also in inner structure. बजट 2026 एक ऐसा संदेश देती है कि देश के विकास अब युवाओं के मुट्ठी में रखा गया है, ना कि नेताओं के मुट्ठी में रखा गया है। तो युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस देश को संभाले और आगे बढ़ाए। हमारा देश आगे तब बढ़ेगा तो जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, और इस देश के युवा जब कैमरा उठाएंगे तो देश की प्रतिष्ठा बचाएंगे। अगर वो कौशल सीखेंगे तो देश की भविष्य बनाएंगे। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर घर में खुशहाली आए, यही बजट की पहचान बने। मेहनत करने वाला हर एक इंसान देश की नई उड़ान बने। द अर्थ awaits our gentle care, the future that is built with love to share. For in our hands the future lies, to paint the world with brighter skies, to paint the world with brighter skies. Jai Hind, Jai Bharat.